बहुत बार ऐसा होता है, हम क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं और क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, लड़की से बात कर रहे हैं और वो इंटरेक्शन कहाँ जाने वाला है। तो एक इंटरेक्शन में हमेशा 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हें पूछने ही पूछने हैं। These are the non-negotiables that need to happen। इससे क्या होता है, we figure out the logistics, जिसकी वजह से हमारा प्लान क्लियर हो जाता है कि वो इंटरेक्शन जा कहाँ रहा है। हर एक इंटरेक्शन में 5 क्वेश्चंस पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये क्यों पूछना जरूरी है, लॉजिस्टिक्स होते क्या है और इनको कब पूछना है, I'm going to be explaining in this video। What's up guys, welcome back to another video। मेरा नाम क्षितिज है और यहाँ आयरन मैन लाइफस्टाइल पे हम हेल्प करते हैं इंडियन मैन को रिलेशनशिप्स में जाने के लिए। और हमारा मिशन है to help 1 करोड़ इंडियन मैन get into deep fulfilling relationship। पहली बात तो 50,000 सब्सक्राइबर्स हिट हो गए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड over 10 lakh people have viewed the content out here on this channel। धीरे धीरे करते करते काफी सारे लोग आ ही गए हैं। It was a very niche thing that we started and now we're at a point where you're a part of the community। और अगर तुम पहली बारी चैनल देख रहे हो गाइस, yo hit the subscribe button, make sure you spank it, smash it, demolish। तो अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स के बारे में, जो एक बहुत ही बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है, जो बार बार हमारे जो भी Q&A सेशंस होते हैं, जो भी में ट्रेनिंग सेशंस होते हैं मेंटरशिप पे, वहां पे वो बार बार आता रहता है। जनरली व्हेन पीपल आर न्यू, जब तुम अभी ये सीख ही रहे हो हाउ टू अप्रोच पीपल, हाउ टू सोशलाइज, हाउ टू एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन, तो इस टाइम पे तुम्हारे इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होंगे। तुम ज्यादा कुछ सोच नहीं पाओगे कि यार अब मुझे ये करना चाहिए या ये बोलना चाहिए या मैं बोल क्या रहा हूँ। अभी तुम्हारा वो जो नर्वसनेस है ना, वही डील करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसकी वजह से जनरली गुड गेम उतना होता नहीं है, तुम्हें पता नहीं होता कैसे बात करनी है और किससे अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, किससे बातें आगे जाएंगी। दैट्स फाइन अगर शुरू में हो रहा है तो, बिकॉज़ वहां पे हमारा गोल इज नॉट टू गेट टू परफेक्ट इंटरेक्शन, द गोल इज टू काम आवरसेल्व्स डाउन, डीसेंसिटाइज आवरसेल्व्स, ताकि हम ज्यादा परेशान ना हो वहां पे। बट मैं देखता हूं जैसे 1 महीना 2 महीना हो गया एंड अप्रोच करना इज सॉर्ट ऑफ फेयरली इजी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। और मतलब लगभग 50 या 100 अप्रोचेस के आसपास हो गए हैं एंड नाउ दे कैन हैव कन्वर्सेशंस, दे कैन हैव इंटरेक्शन। कभी कभार 1-2 फोन नंबर्स मिल जाते हैं बट थिंग्स डोंट गो एनीवेयर और फोन नंबर भी फ्लेक होते हैं। द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट इज यू डोंट हैव अ प्लान। और प्लान डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्लियर डेटा होना चाहिए, बट डेटा हम लड़की से कभी मांगते नहीं है, हम देखते नहीं है कि क्या होने वाला है। 2 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे लॉजिस्टिक्स फिगर आउट करने के लिए। नंबर 1, हाउ मच टाइम डज शी हैव, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हाउ मच टाइम द गर्ल हैज। एंड सेकंडली, व्हाट क्लोज डू यू गो फॉर बेस्ड ऑन कि कितना टाइम बचा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डे गेम का टाइम है, मॉल में है, एक लड़की से बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन ठीक ठाक जा रही है, हमें पता नहीं है कि लड़की के पास टाइम कितना है। मे बी उसके दोस्त लिटरली आने ही वाले हैं या उसको कहीं और पे जाना है या वो इंटरव्यू के लिए लेट हो रही है। और हमें लगता है क्योंकि बात बहुत अच्छे से हो रही है एंड शी इज टॉकिंग टू अस राइट नाउ, वी कैन बी लाइक यार चलो लेट्स गो ऑन एन इंस्टा डेट, ब्राउनी खाने चलते हैं या इधर उधर चलते हैं, पानी लेने चलते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे परफेक्टली फाइन इंटरेक्शन जो जा रहा था वहां पे यू एडेड सम सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस टू द प्लान। और अब लड़की को बोलना पड़ेगा नहीं एक्चुअली आई एम गेटिंग लेट, आई नीड टू गो। तो जहां ये लड़की को मना करना पड़ा है, दिस वी कुड हैव अवॉइडेड बाय सिंपली अंडरस्टैंडिंग और मे बी जस्ट आस्किंग हर व्हाट आर यू अप टू टुडे, क्या चल रहा है। एंड शी वुड हैव टोल्ड यू एक्चुअली आई एम मीटिंग फॉर माय फ्रेंड्स, मेरी कैब आ गई है, मेरे दोस्त आने वाले हैं, मैं बहुत अर्जेंट मीटिंग के लिए लेट हो रही हूं, मेरा एक्चुअली इंटरव्यू था यहाँ पे, आई एम मीटिंग अ क्लाइंट। ये सारी बातें जो क्लियर हो जाती है, या फिर मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। दिस इज इवन बिगर एज अ साइड नोट, कई बार लोग बात कर रहे होते हैं लड़की से, कन्वर्सेशन सही जा रही होती है, बिकॉज़ वी डोंट फिगर आउट हर लॉजिस्टिक्स, मतलब किसके साथ आई है, दे गेट ब्लाइंडसाइडेड। सडनली या तो उसके 2-3 दोस्त आ जाते हैं, कभी फैमिली आ जाती है, कभी भाई आ जाता है, और जैसी कोई और आता है वी गो इनटू अ पैनिक स्टेट। फक यार अब क्या करें, इसकी मॉम आ गई, इसके डैड आ गए। ऑल्दो द बेस्ट वे इज टू नॉट गो इनटू पैनिक स्टेट एंड जस्ट काम डाउन एंड रिलैक्स। बट एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अब यहाँ पे फोन नंबर कैसे मांगे। द बेस्ट वे फॉर यू टू डील विद दैट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इंस्टेंटली। Someone is like, hey man, what's happening? Hi, Kshitij, nice to meet you. Hi, you guys are amazing. We were just talking about a couple of things, and I'm gonna let you guys go. I'm just gonna say bye to her real quick. हल्का सा mini isolation, step to the side. So if it's a situation where अगर उसकी mom है या फिर उसका भाई है या कोई friends आ गए हैं, and you don't want her to feel embarrassed and feel like a slut in front of her parents and everyone giving you her number or Instagram whatever, best way for you to do is talk to them. एक या 2 बातें करी, उसके बाद be like, alright, I'm gonna leave. You guys should carry on. My friends are coming, and then you go in for a hug. हल्का सा side में होके like take 1 step to the side. बातें करते करते ऐसे नहीं होनी चाहिए, अच्छा I'm gonna leave, and then you step to the side and then the girl comes. नहीं, तुम वहीं पे ऐसे बातें कर रहे हो, you sort of on the side, you're gonna be like, alright, I'm just gonna say bye. You give her a hug, and there you exchange phone numbers in the year. The same example is given in video how to approach guy girl groups, and this is exactly what I'm doing. She's giving me her number, but मैं कान की जगह what like I'm taking it on the side like this so that no one else can see. Coming back to the portion. अब यहाँ पे had you understood पहले ही कि क्या है, कि उतने दोस्त आ रहे हैं उसके, कोई फैमिली मेंबर तो नहीं है, एक्स बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, whatever the fuck is going on, you will understand what your plan should be. या फिर वो लेट हो रही है, once you understand तुम्हारा प्लान क्या है, तब तुम देख सकते हो कि यार मैं फोन नंबर लूं या इंस्टाग्राम लूं या मैं इंस्टा डेट पे जाऊं, या फिर हम बाद में डे 2 कर सकते हैं, हम शाम
शाम को मिल सकते हैं, लाइक राइट नाउ शी कैन गो एंड देन उस हिसाब से हम देख सकते हैं व्हाट शी इज डूइंग इन द इवनिंग, और शाम को प्लान कर सकते हैं क्लब में मिलने का, और मे बी आज उसको कुछ भी काम नहीं है एंड यू कैन मेक दिस एंटायर डे अ बिग डेट एंड बाय द एंड ऑफ द डे you guys can move things ahead somewhere else as well. So that understanding is going to be super crucial for you to progress in game and to understand कि एक interaction को कहाँ तक तुम लेके जा सकते हो so that it does not end prematurely, वो पहले ही एंड ना हो और वो एक्सपीरियंस लड़की का बहुत ही अमेजिंग सा हो जाए. गिविंग यू वन और टू एग्जांपल्स टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर क्लियर. अगर एक लड़की को अप्रोच करा हमने दिन में, डे टाइम में, लेट्स से मॉल सिनेरियो लेते हैं, आई अप्रोच हर एंड शी इज वॉकिंग रियली फास्ट, ऑलराइट, आई कैन सेंस सी बाय बॉडी लैंग्वेज शी इज गेटिंग लेट और शी नीड्स टू बी समवेयर, सो आई एम गोना अप्रोच हर एंड मैंने उसको स्टॉप नहीं करूंगा कि भाई स्टॉप, आई एम गोना अप्रोच एंड देन आई एम गोना सॉर्ट ऑफ स्टार्ट वॉकिंग विद हर. एट सम पॉइंट इन टाइम आई एम गोना बी लाइक, इज इट फाइन इफ आई वॉक विद यू, और बात करते करते यूजुअली माय ओपनर इज गोना बी लाइक, यू सीम इन लाइक सो मच ऑफ अ हरी, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, और इट कुड बी लाइक, डूड आई लव योर वॉक बट यू लाइक walking so fast, like are you in a hurry, क्या चल रहा है, and she's going to tell you मेरी cab आ रही है, मेरा interview at this and that, and then you can be like, is it okay if I walk with you, she'll be like, yeah sure, then you walk with her. इतनी देर में now I can plan कि क्या हो सकता है because I understand logistics, how much time I have. I've got barely 3 minutes before we reach your cab, maybe the cab guy is already waiting that, if he's not waiting that then I've got 2 more minutes. मैं बस boring बातें नहीं कर सकता हूँ because she's anyway not going to be paying enough attention to me because उसकी cab and she's walking really fast, so I need to say things, talk things which will make me grab her attention, which is usually going to be heavy flirts, heavy teases, heavy pushes, heavy pulls, flirt, tease, banter, bakchodi. I need to ramp it up because मुझे पता है I need to make an impression in the next 2 minutes. If I don't make an impression, she's going to forget. Even if I ask her a number, वो number भी दे देगी, she'll forget and that interaction will flake. I will never be seeing the girl again. I make it very fun, fast paced, बहुत सही करके and create that interest in her and get some form of attraction going on. By the time we reach there, there's like heavy flirt, clearly like, you're so fucking amazing, I love you, whatever, and like just anything which can just make her emotions rise, saying things out of the ordinary. By the time you reach the cab or whatever, you can be like, I'd love to hang out with you sometime, let's exchange numbers. Sometime be like, I'm actually in a hurry, I'll see you later. You can persist here. You can be like, you're never going to see me again, let's just exchange numbers. It's great talking to you. Once she gives you the number or the Instagram, whatever you're taking, you still have a higher chance of it not flaking versus ये जो interaction में तुम बात कर रहे हो लड़की से, if she's really worth it, you barely had 2 minutes वहाँ पे, right? This is going to be the best probability of your interaction जो तुम यहाँ पे कर सकते हो, and that's all जो हमें जिससे फर्क पड़ता है. Similarly, रात के टाइम पे अगर हम क्लब में हैं एंड क्लब के बाद we're going for an after party somewhere, या फिर I'm inviting her to my place or she's inviting me to her place, वहाँ कुछ चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसके साथ रहती है, क्या वो दोस्तों के साथ आई है, is she gonna ditch her friends to come with me or not. So dynamics figure out करना इंपॉर्टेंट है. Now all of these logistics figure out करना, ये सारी चीजें करना, ये ऐसा नहीं है कि तुम एक के बाद एक करने वाले हो, या ऐसा नहीं है कि तुम पहले ही मिनट में ये बातें पूछने वाले हो, but it should be spaced out in a longer interaction depending on the time you have. अगर एक क्लब में है, I met a girl, it's gonna be easily half an hour to 1 hour, I'm gonna space these things out बीच में थोड़ा, so that I sort of have a plan as to what I'm doing. Now, I'm going to tell you the 5 ways that you can find out some of the logistics, and these 5 are going to be super important specifically in the club. Number 1, you want to ask who are you here with. ये definitely daytime में, this is to avoid issues like family and everyone jumping up. कभी भी अगर कोई आ रहा है, like if she's with the family, I know 5 minutes she's going to go, so again the same thing, ramp up the attraction, get a number, move. Alright, that's the best you can do. It's important to figure out who she's with. So number 1 question, who are you here with? Maybe she's waiting for a friend, blah blah blah. बहुत चीजें clear हो जाती हैं. Number 2, where do you put up? So you figure out her area, वो कहाँ पे रह रही है, alright? And this should not come directly after the first question, alright? This should come थोड़े time बाद. If she's in a hurry and she's leaving in 5 minutes, I don't need to find out where she stays. अगर 1 घंटे का वो interaction चल रहा है, then it makes sense to find out where she puts up, because maybe I can drop her back or maybe she can come with me. अगर हम पास में जा रहे हैं, we can split a cab, maybe I can drop her in my car वहाँ पे, and sort of that leads to an interaction जहाँ पे you know we can be isolated साथ में, हम अकेले हो सकते हैं. तो एरिया फिगर आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. नंबर 3, हमने एरिया पता लगा लिया. अब तीसरी चीज पता लगाना है कि who do you live with, और इसका मतलब है क्या वो अपने दोस्तों के साथ रहती है, फैमिली के साथ रहती है, या अकेले रहती है. अगर वो फैमिली के साथ रहती है, there's a high chance you will not be going up to her place. If she stays with friends, maybe you can, but if she stays alone, maybe you can as well. Alright, तो वो चीजें हैं. एक और चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वहां पे पता लगाना है if she has pets or not. अगर कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, तो maybe वो overnight she might not want to leave the pets alone at home. So इसलिए the best way that you're going to be, like, you know, rather than being like, come to my place, come back to my place, you're going to party to my place, maybe she's going to invite you to her place, and then that's going to be a much better thing. Or you maybe drop her at her place and then she invites you in, you come in, and then, you know, beautiful things happen after that. Question number 4 जो तुम्हें figure out करना है कि वो जहाँ रहती है, क्या वो अपार्टमेंट है, या वो उसका खुद का घर है, या पीजी है, या हॉस्टल है. इससे पता चलता है अगर वो पीजी या हॉस्टल में रह रही है, मे बी वहां पे लड़के अलाउड नहीं होंगे. So if you're trying to go to her place, people might not be allowed. अगर वो अपार्टमेंट में रहती है, मे बी वहां पे अलाउड है. तो कई बार ऐसे भी होता है, people stay in apartments but नीचे लैंडलॉर्ड रहते हैं, तो वो चीजें में अलाउड नहीं होता. So somehow it should come up कि यार वो कहाँ रहती है, is it an apartment, flat, what kind of place that is. Another way that I like to figure the same thing out is बीच में बात करते करते let's say club is closing, alright, so
so around 30 minutes of interaction is happening. इसके बाद हम after party plan करने वाले हैं, alright? If there's a great connection and I know she wants to spend more time with me, तो मैं पूछ सकता हूँ उससे कि यार let's hang out after this. अब अगर मेरे पास खुद घर नहीं है, she's like कहाँ जाएंगे? Then I can be like where do you stay? She's like I stay in an apartment. I'm like हम आ जा सकते हैं, तब वो मुझे बता देगी वहाँ पे लड़के अलाउड नहीं है, एक्स्ट्रा लोग नहीं आ सकते, ब्ला ब्ला ब्ला. सो आई नो अभी इंटरेक्शन खत्म नहीं है, बट अभी हम उसके घर नहीं जा सकते. एंड इफ यू वांट टू गो समवेयर एल्स, आई नीड टू फिगर दैट आउट एंड बी क्रिएटिव. या तो मैं अपने घर पे ला सकता हूँ, बट मेरे घर पे भी पेरेंट्स होते तो मैं नहीं ला सकता. देन मे बी मैं किसी दोस्त के घर पे जा सकता हूँ, या मेरे कोई विंग्स है उधर हम जा सकते हैं. तो एक प्लान बहुत क्लियर सा बन जाता है. And finally, question number 5, figuring out when does she have to get back. So तुम पूछते हो, do you have a curfew? So she tells you कि मेरे को हाँ I need to get back इस इतने टाइम पे, blah blah blah. Another way to put it is, so what are your plans after this? इसके बाद वो बता देगी मैं हम सारे इसके घर जा रहे हैं, हम उधर जाना है मेरे. Or she's gonna say I have no plan. If she says I have no plans, that means she's down to go with you. If she says कि मेरे को अपने दोस्तों के साथ इधर जाना है, now you can come up with a different plan कि क्या तुम्हें भी दोस्तों के साथ जाना है, या somehow you can get her to leave her friends and come with you, या तुम पूरा ही उसके ग्रुप को, फ्रेंड्स के ग्रुप को अपने साथ लेके जा सकते हो. So couple of ways this can go. और ये फिगर आउट करना इंपॉर्टेंट है for you to again figure out कि ये इंटरेक्शन जाने कहाँ पे वाला है. These are the 5 non-negotiables that you have to ask in an interaction, and these are number 1, who are you here with? Where do you put up? Number 2, number 3, who do you live with? Is it friends, family, अकेले रहती है और pets है या नहीं है? Number 4, is it an apartment? Is it a hostel? कहाँ पे कैसे रहती है? Number 5, when does she have to get back? What are her plans after this? ये figure out करना से तुम्हारा plan काफी simple हो जाएगा. And that's going to be all from my side, guys. This is Kshitij signing off. I hope you guys like the video. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है और तुम सब्सक्राइब नहीं हो, guys, ये जो सब्सक्राइब बटन है नीचे में इसको दबा दो. Spank it, smash it, demolish it, and I'm going to see you guys in the next video. Signing off. Peace.